कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी आने वाले समय में कौन से प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ग्रोथ यहां पर दिखाई दे रही है। साथ ही करेंगे कंपनी के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक के बारे में चर्चा। लेकिन मैनेजमेंट से हम बात करें उससे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ। होम केयर और पर्सनल इंडस्ट्री में फोकस है कंपनी का। 75 देशों में कंपनी की मौजूदगी है और 1750 से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पर दर्ज हैं इनके पास। यूनिलीवर, पीएनजी, कोलगेट समेत दिग्गज ग्लोबल क्लाइंट्स भी कंपनी के लिस्ट में शामिल है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 7 साल में डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1:1 से घटकर 0.2 पर फिलहाल यहाँ पर ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। तो चलिए, ये कंपनी के बारे में हमने आपको बुनियादी जानकारी दे दी है, लेकिन अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। हमारे साथ नटराजन जी जुड़ गए हैं, ईडी और सीईओ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से। नटराजन जी, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। सवाल पहले ये होगा कि अगर हम रॉ मटेरियल्स के लिहाज से जानना चाहें तो उनकी कीमतों में थोड़ी सी अब कमी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर फ़ायदों के लिहाज से समझना चाहें, मार्जिन पर फ़ायदों के लिहाज से समझना चाहें तो किस तरह से इसका आउटलुक आप आता हुआ देख रहे हैं? आप अगर देखोगे जो कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं उसमें उसका अच्छा नतीजा यही निकलेगा कि अभी प्राइसेस ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स विल स्टार्ट बीइंग रिड्यूस्ड एंड दैट वुड स्टार्ट किक स्टार्टिंग द डिमांड बिकॉज द मेजर कंसर्न ओवर द लास्ट ईयर व्हेन द प्राइसेस वर टेकन अप सिग्निफिकेंटली ये था कि वो डिमांड इंपैक्ट हो गया था. नाउ व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम आवर कस्टमर्स इज दैट with the commodity prices coming down and stabilizing, it gives them a good opportunity to reduce prices and then kickstart the demand. So that is one. Second is with regard to on margins. See, typically as the prices come down, we obviously will pass on the reduction, because it's not that you can remain without passing it down. So we will take judicious price calls to ensure that we are able to partake in the demand growth that we expect. नटराजन जी, ग्रोथ सिनेरियो को लेकर जो आपके की मार्केट्स हैं उसके बारे में कुछ बताइए। यूएस, यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लो डाउन और रिसेशन जैसे रिस्क हैं, महंगाई बढ़ रही है। किस तरह का आउटलुक आप पेश करना चाहेंगे? क्या क्या चैलेंजेस अब आते हुए दिखाई देंगे? If you take US, see, there are only two bright spots in the entire, in the geographies that we are operating in. The one is India, and the second is US. So if you look at India में जो demand जो भी cutback हुआ है, it's happened, but it is something that is manageable. And I think if we are able to see the demand coming back in the coming months, I think we will end in a good spot. So that is good. So that it also is reflective of the way we have grown our volumes in the India market by close to 8% in last quarter. And for the entire half, we have grown at 6%, which is ahead of the market growth, because the rural demand has been impacted. As regards US, we do see when we talk to our customers that they have apprehensions in terms of the coming months, in terms of how the recession may hit. But what we hear is that even if a recession comes in, it will be a shorter one and it will quickly come back. They call it a soft recession. So in the first 6 months, if you see, our US business has been doing pretty good. So we do hope that, this particular momentum continues. And if at all any recession is there, it should be short-lived. चलिए, लेकिन यहाँ पर अब सवाल नटराजन जी ये भी खड़ा होता है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम FY 23 के बात करें तो कैसी उभरती हुई इसकी कहानी आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो वॉल्यूम डिक्लाइन की किसी भी तरह की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है क्या? इसको लेकर कोई समझाइश आप देख सकते हैं? See, volume का एक चीज है, we are well prepared on the supply side, because the supply side challenges जो पहले last year था, they have started reducing in terms of logistics scenario, in terms of raw material availability. So things are much better, although not to the levels that we had experienced pre-COVID. So things are getting back to normal. So that's a good sign. So first is we need to be prepared from the supply side. So that is a good spot to be in.
As regards demand, if you see the demand will start coming back now, but then overall, if you see the year that we will end, we'd be happy if we are able to be closer to the volumes that we did last year. But yes, we are desirous of at least ending the year with a 2 to 3% volume growth over last year. But yes, the external environment and the demand environment has to be conducive. नटराजन जी, अगर आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की हम बात करें तो 200 से ज़्यादा लगभग चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट्स होंगे आपके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। आपने कई सारे पेटेंट्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कोई की प्रोडक्ट के बारे में हम जानना चाहें जिससे ग्रोथ को फ़ायदा हो रहा है 5 सालों के दरमियान, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? Yeah, so if you look at it, the way our innovation actions are targeted. So we target based on the consumer trends. So what we see as consumer trends, consumers are wanting products which are sustainable formats. Like people are wanting to have more of solid, options. So essentially looking at solid shampoo bar formats. Okay, they're looking at powder concentrated formats. Okay, which can enable them to be saving on plastic and all that. So we have a lot of formats that are ready, and we have already launched them. So we have launched what you call as Galaxy Trescon, which is a solution for making a solid shampoo bar. We have formats to make concentrated formulations that the consumer then can dilute at their end. So pretty good for solutions we have in this regard of what consumers expect on sustainability. Dusra format A hai where people are looking for sulfate-free formulations. So we have a good amount of options that we have for many of our customers, and we have launched them, and we do see there's a good traction in the D2C segment, direct to consumer segment in India. We also see good traction happening, say in US and Europe, in Asia Pacific as well. The third trend that consumers are looking at is in terms of having their products preserved with non-toxic preservatives. So we have very good products that have been launched, and it's finding good traction in the market. So we do see that these things will start picking up well. The only thing is it had all picked up well in terms of the projects in pipeline, but in some of the markets where it's been plagued with high amount of inflation, like say Europe, or where the demand environment is obviously not very bullish. I think there are some projects that people are delaying a little bit, but that we see is a temporary. But we see these product formats that we have launched on the sustainability front, on the sulfate-free formulations, and on non-toxic preservatives, getting a good traction, and we are well prepared in terms of capacities as well. So that's going to be a good trajectory for us in the coming years. आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें एक चीज़ जो हाईलाइटेड की गई है, जो सामने आ रही है, वो ये है कि लगभग 150 से ज़्यादा कस्टमर्स आपने इस्टेब्लिश किए हैं इमर्जिंग ऑनलाइन ब्रांड्स के लिहाज से, अगर हम समझना चाहें। इनमें से कितने ऑन बोर्ड आ गए हैं और किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आपको इस तरह के कॉन्टैक्ट से अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? So they're pretty, in fact, all those actions, all those customer engagements on the direct to customer brands, they're progressing pretty well. We actually are seeing a lot of customers wanting to launch new formats in line with the consumer trends. And we have a good application development capability to be able to help them with the formulations, because all these people, customers have a good product idea in terms of what claims on which they need to be launching, but they need to have the formulations that can fulfill those claims on basis which they want to be launching. So that is the expertise that we have, and that is giving us a good amount of traction with these customers. Coming to what do we see in terms of the way this market will grow pretty significantly because consumers are becoming very aware, and the social media and the online shopping channels give them a plethora of options which they can evaluate and buy products that suit their individual needs. So that's a good thing, and we do see that this is going to be a critical growth segment, and we are well positioned to be able to leverage on this growth that we expect.
राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और तमाम पहलू रखे कंपनी को लेकर हमारे सामने। लेकिन चलिए, अब इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में हमारे एक्सपर्ट्स अब किस तरह की रणनीति सुझा रहे हैं। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं sharmilajoshi.com से। शर्मिला, हाय, गुड आफ्टरनून। बताएं, क्या लगता है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस स्टॉक में दर्शकों को? यस, तो मुझे लगता है कि इनकी रेवेन्यूज और जो प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है वो काफी ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक में सभी पॉजिटिव प्राइसिंग लग रही है ये समय में, तो थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड रहेगा। अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से खरीदना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला, समय निकाला आपने इसके लिए। लेकिन चलिए